आपका आज वीडियो स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है Why the world take India seriously now? First time since 1947 अभिजीत चावड़ा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिन आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। हमारे लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। SSAN says, why is the world listening to India now and not ever before? What have we done that we are in this position now? And what mistakes to avoid so that the young population helps in the growth of the country? Binge watch and learn about geopolitics on Ask Abhijit Clips. Subscribe now. Yes, the world is listening to India now. Though India figures in most global conversations, great power conversations. And what have we done now that we did not do before? Well, firstly, we have a very strong independent foreign policy which prioritizes India's national interest over everything else. We don't care what the Americans want. We don't care what the Chinese want, what the Russians want. We care what is in our best interest, and we will always put that first. And that's how we are dealing with international relations. When you do that, people respect you. When you have self-respect, people respect you. In the past, India, the stance of the Indian government and the former prime ministers was that India has no ambition of being a great power. We have no ambitions of being great, and our foreign policy was oftentimes, I would say, it would take a backseat to the national priorities of other nations. That's how it was always done in the past. It's the first time since 1947 India has a robust, independent foreign policy that always puts India's national interest first. So that's the first thing. And secondly, India's economy is growing again. It stagnated for a long time, but it's now growing again, and it's projected to keep growing. And India is focusing on infrastructure development, which is going to speed up the economy. So India is building 30, 40, 50 kilometers of highways every single day. Imagine that. We are bringing in hundreds of new high-tech trains, the Vande Bharat trains, and we're going to soon, in the next 5-10 years, maybe start building more bullet trains. We are building new airports almost every year. A few new airports come in. We are significantly expanding our airline fleet. The number of airports that we have, tier 2, tier 3 cities are also going to be connected by air. It's now affordable for just about anybody to travel by air. In the past, it was like a big luxury for someone to travel by air. So everything is changing now. The data rates are extremely low in India. The internet data rates, lowest in the world, I think. India is totally transforming and revolutionizing the entire infrastructure that we have. That's what this government is doing. These things have never done before. The entire country is more or less electrified. Obviously, there'll be some spots somewhere or the other where the electricity has not reached yet, because we have an extremely challenging terrain in some parts of India. More or less, the entire country is now electrified. You can see the results from space now in nighttime images. We are, if you look at the nighttime imagery of nations and the kind of light output is there, India surpasses China already by a big margin, if you consider that as a yardstick. There's and everybody has bank accounts now. Everybody has insurance. These things, they are going to bear fruit in the next 10, 20, 30 years. You will not see the result immediately, but it's already put India on the cusp of a major economic explosion, productivity and growth of the economy. That's what's happening. The world sees it. They can't help but see it. And when you do this, the world will take you extremely seriously. You place an order for 800 aircraft, roughly. It's going to create 1 million jobs in the US and many more in France and the UK. We are able to now affect the world's economy through our own actions that serve our interests. When you do the really hard work and you put yourself in this position, the world will listen to you. The world will take you extremely seriously and they will respect you. So that is what India has done. It has been done by the government of Narendra Modi, nobody else. Well, that is a fact. No one else did it. Mr. Manmohan Singh did nothing of this sort. Neither did the prime ministers who came before Mr. Manmohan Singh. Dr. Manmohan Singh, sorry. So that's what's happened. India has never been taken seriously in the past. Only in the last 5-6 years this has happened, and now they are taking India very seriously, and it's going to only increase in the future. India is where China was in the 1990s. Right now, that's where we are. The Chinese were extremely serious about their growth, about their national interest, and the world started taking them seriously in the 1990s itself. They had started talking about China as a potential superpower in the 1990s itself. India is now at that stage. They now understand that India is serious. India means business. India is not going to tolerate any nonsense. And that's why they are taking India seriously now. In the next 5 to 10 years, they will most likely take India more seriously than they take China right now. It's a possibility. If
We do things right. So that's why this change has come about. It's come about because of the policies of the Narendra Modi government and the incredible hard work they've done. You may like him or hate him, I don't care what it is. Facts are facts. Now, what mistakes to avoid so that the young population helps in the growth of the country? Well, the mistake you avoid is you don't stop reforming the nation, reforming the governance system, reforming the bureaucracy, reforming everything, and you don't stop creating more infrastructure. We are just beginning. We have to connect the entire nation thoroughly through highways, through railroads, through airports. We have to reform the bureaucracy. We have to reform the judiciary. We have to reform the governance system. We have to root out corruption, which is still a big issue. We have to reform the political system. Maybe bring in a new constitution, maybe a presidential system. These are long-term goals, maybe next 10, 20 years, not immediately. But these things will truly catapult India to a genuine, maybe possibly even superpower status in the long run. So these things need to happen. The education system needs to be reformed. There are enormous challenges that need to be addressed, but these will happen organically as India's economic might and military might grows. Once you do that, there will be, the larger is your economy, the more powerful is your economy and military, the less foreign interference there will be in your internal matters. Right now, there is still a significant amount of foreign interference in our internal matters. All the millions of NGOs in India, many of them are funded from abroad. There are all kinds of activities that are happening within India. Many of India's, well, some of India's possibly, allegedly, institutions may be compromised, some would say. So all these things will be dealt with organically as India's military and economic might grows. Once you are that powerful, the world will not be in a position to interfere that much under the name of human rights or democracy or promoting this or that or whatever. It's none of your business. Get out of here. That's going to be the message that we will give to them eventually. So that's what the government needs to keep doing. What can the young population do to help grow the country? Well, be productive. Understand yourself, understand what your strengths and weaknesses are, focus on your strengths, develop them more, and be productive. If you take a 9 to 5 job, do your best in contributing to your company or to your employer. If you take up entrepreneurship, create more jobs and create value that the society can actually benefit from. That's a simple thing. So raise your standards, develop yourself into an all-round well-developed person who can reach the full extent of your potential and contribute to society in whatever way you can. If everybody does that, it's going to really transform society. Right now, India, unfortunately, is to a large extent a nation of very low standards. Chalta hai attitude, right? That's what they say. So that needs to go. So the main thing you can do is to raise your standards, contribute more to society through whatever means you have. And if you are into business or entrepreneurship, create jobs and give more people the opportunity to contribute in their own way to the nation, to the society. That's what you can do. भाई टाइम के साथ साथ जो है ना हर कंट्री के लिए जो है ना बहुत ज़रूरत है कि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उनको अपडेट करें और उनके जो जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आएँ कि भाई आपके मुल्क को जो है ना हर तरफ से जो है वो बेनिफिट हो रहा है। अगर करंट टाइम में देखा जाए तो भाई इस टाइम इंडिया जो है उनकी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, आप इकोनॉमी को लेकर देखें तो हर लिहाज से इंडिया फ़ायदा उठा रहा है। वेल जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, मुझे लगता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक तरह से वो आपकी बैकबोन है। आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशन किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के आपका कंट्री का स्टांस क्या है किसी भी मुद्दे को लेकर, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अनडाउटेडली उसमें जो गवर्नमेंट होती है जो रन कर रही है कंट्री को, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ की वजह से, उसके डिसीजंस की वजह से वो एक इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में जाता है, एक इमेज बनता है पूरी दुनिया में। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि जहाँ तक अभिजीत सर की बात मुझे समझ में आई है कि लाइक आपको हर सेक्टर में अपना योगदान देना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ आप एक ही जगह पर काम कर रहे हो,
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे फिर वो जस्टिस से रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर आप अगर बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हो, हर तरह की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। अपनी जो पुरानी आपकी मिस्टेक्स हैं उनसे सीखना पड़ेगा, लोगों को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अपना एटीट्यूड चेंज करना, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में जब लोग अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं ना काम को लेकर, तो असल में तब आपको एक रेवोल्यूशन फेस मतलब देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग यही बात जैसे बीच में सर ने बोली कि चलता है, यहाँ पर तो मैं बहुत ज़्यादा ये देखती हूँ कि ये एक है एटीट्यूड, हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे बस में नहीं है। सो आई थिंक वो हम एक चेंज लेकर आना ही नहीं चाहते, बट उसका हम जो रिस्पॉन्सिबल मतलब समझते हैं वो गवर्नमेंट को समझते हैं या फिर बाकी सारे अदारों को समझते हैं। हाँ, मैं ये भी ज़रूर मानती हूँ कि गवर्नमेंट की भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है, और लेकिन ये कि कहीं ना कहीं पर एक आम व्यक्ति का भी बहुत योगदान रहता है। यार देखें, सबसे बड़ी चीज़ वाकई होती है कि आपने जो मिस्टेक की है ना, सबसे पहले उसे एडमिट कर लेना कि हाँ भाई ये एक गलती थी जो हमसे हो चुकी है, तो अब हम जो है उसे सुधारना चाहते हैं, ठीक है ना। उस गलतियों को जो है ना फिर आप जब दोबारा से उन पे वर्क स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि वो एक तरह का आपका फेलियर होता है, ठीक है ना, उन पे जब वर्क करते हैं नई से नई चीज़ जो है वो आपके सामने आती है, नए जो है आपके आगे जो है वो रास्ते खुलते हैं, तो आपको जो है बेहतर पता चलता है कि आप चीज़ों को जो है वो किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। रिसेंट टाइम से बाकी बात करें तो अगर इंडिया ने जिस तरह जो है अपनी पॉलिसीज़ को रीशेप किया है, दुनिया के लिए जिस तरह अपने द्वार जो है वो खोले कि भाई आप आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो उसका जो है आपको फल भी देखने को जो है वो मिलता है। आपको जो है हर कंपनी जो है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है इंडिया में इन्वेस्ट करती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। टेस्ला की बात करें, एप्पल की बात करें, ये एक ऐसे नाम है कि भाई जो पूरी दुनिया में जो है जाने जाते हैं। IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब, हर जो कंपनी है उसका ऑफिस आपको इंडिया के किसी ना किसी शहर में जो है वो ज़रूर देखने को जो है वो मिलेगा। तो भाई जब इस तरह कंपनीज आपके पास आती हैं ना, तो इसमें कोई शक नहीं कि एक तो जो इन्वेस्टर होता है उसका भी जो है आप पे ट्रस्ट बढ़ता है, उसके साथ साथ जो आपके अपने लोकल लोग हैं उनका भी जो है ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नमेंट के कि भाई हम जो है इन्वेस्ट करेंगे तो हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस जो है वो देखने को मिलेगा। इंडिया में जो है स्टार्टअप्स की बात करें तो भाई लाखों की तादाद में जो है इस टाइम इंडिया में स्टार्टअप्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कुछ जिनमें से यूनिकॉर्न बन चुके हैं, कुछ यूनिकॉर्न बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, और कुछ जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, और इकोनॉमिक कंडीशन मुझे लगता है स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे सिर्फ आपकी अपनी कंट्री के लोगों को फ़ायदा नहीं होता, उससे आपका ग्लोबली एक बाकी कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट होता है। और उसकी रीज़न ये कि जैसे बीच में सर ने एग्जांपल दी जो कि प्लेन्स का एक लाइक इतने ज़्यादा प्लेन्स ऑर्डर जो किए गए थे, लगभग 500 के पास जो ऑर्डर किए गए थे। सो उसमें जिस तरीके से आई थिंक टाटा ने किया, टाटा ने बिल्कुल। तो जैसे बाकी देशों के लिए, चाहे वो यूके है चाहे वो फ्रांस है, मतलब उनके लिए जैसे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बनेंगी, तो डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा कंट्री के पास पैसा है, और वैसे भी जिसके पास पैसा है सब उसी की सुनते हैं, और बाकी में फिर आपकी जो इंटरफेरेंस है ना वो काफ़ी कम भी हो जाती है, और जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। और आज के टाइम में भी हम लोग देखते हैं जैसे वेस्ट जो है वो बहुत जल्दी इंडिया में कोई भी चीज़ होती है तो बहुत जल्दी अटैक करता है उन चीज़ों को, और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, नेगेटिव एक इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर बहुत आसानी के साथ फिर काउंटर होना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि अपने कंट्री को मतलब स्ट्रॉन्ग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसके लिए उस प्रोसेस को एक रोड मैप बनाने के लिए आपके पास अच्छी लीडरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया के पास मुझे लगता है कि इस टाइम पर लीडरशिप बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है। यार देखिए, खाली धाड़े मारने से जो है ना कुछ नहीं होता। आपको जो है अगर आपने तरक्की करनी है उसके लिए आपको जो है वो काम जो है वो करना पड़ेगा, बेशक जैसे मर्जी है, आपको लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई काम करें आप, तो फिर ही जाकर जो है वो चीज़ें सुधरती हैं। और फिर वही बात है जी, शॉर्टकट जो है कोई नहीं होता, हमेशा जो है वो सब्र से और क्या नाम लेते काम करते रहने से, बिल्कुल काम करते रहने से जो है चीज़ें ठीक होती हैं। और ये भी कि सिर्फ एक सेक्टर पर आपको रिलाय नहीं करना होता, आपको हर सेक्टर में काम करके दिखाना पड़ता है। एनीवे गाइस, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रिफॉर्म लाकर इंडिया इससे और ज़्यादा अभी के टाइम में भी ग्रो कर सकता है, और वो हर्डल्स हैं जिनको रिमूव किया जा सकता है। ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।